Bhavishya, good morning. First of all, thank you for your giving me this opportunity to introduce myself. My name is Dinesh Prajapati. I am basically from Kolkata, but currently staying in Indore. I am working in telecommunications industry. Dinesh, your voice is not audible as of now. I think some issue in your side. Bhopal Sorry, sir. In which domain you are working? Hello. In which domain Yeah, you are working? I am in transmission in Nokia BTS and Ericsson BTS. Okay, so you are working for microwave side. Yeah, microwave and BTS 2G, 4G and 3G. Okay, total experience 4.6 years. and what about your package? Is greater than 5 or less than 5? Less than 5. Okay, great. Okay, next. Guys, next. If you have any issue, we'll say by name. Okay. Yeah, Chandra Kishore. Good morning, sir. Myself Yeah. Chandrakishore Jha. Currently, I am working in Reliance Jio as a EV engineer. Total experience. I have 7 year experience, sir, in electrical engineering. Okay. In which company you are working? Reliance Jio. Yes, sir. Currently, I am working in Also, Reliance Jio. also your 10 package is employees. less. Also your package Yeah. is less than 5, right? Yes, sir. Yes. Okay, great. Next, Deepak Singh. हेलो Yes, Deepak. मैं करंटली 5G प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एरिक्सन का क्या कर रहे हो? DT, optimization, planning, क्या? What is प्रोजेक्ट profile? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन एंड कमीशन Okay, installation and commissioning belongs to hardware. हाँ जी Total experience अराउंड 6 साल का and package less than 4, 5. अराउंड 450 Okay, great. Next, Umesh Gupta. Good morning, sir. Yeah, Umesh. Currently, I am working Reliance Jio as a RE team real estate, Site and acquisition. I have JJ, and I have also a DT engineer in my previous company. My total Okay, package less than 4, 5. less than 4. Less than 4. Experience greater than 4, 5. Experience greater than 6 years. 6 years. Okay. Now Hasib. Hasib Pacha. Hello. Yeah, Hasib. Yeah, sir. I am currently working in Nokia. Currently working in Nokia as an RNO. Okay. Total experience. 7 plus year. 7.5. Package less than 7. Yeah, 6.24. Okay. Yeah. Okay, good. No. Now Mahesh Pant. Mahesh. Mahesh, are you there? Okay. Mukesh. Mukesh Kumar. Mukesh.
Mukesh is also working for RF in Gurgaon. 5 to 6 year experience, package less than 5. Yeah, Naseem, Kausa. Naseem, are you there? Pulkit Sharma. हेलो Yeah, सर Pulkit. मैं एरिक्सन में एज अ विंडो इंजीनियर है पैकेज लेस देन 5 Experience greater than 5? हाँ जी हाँ जी Okay. Rabulan. Yes, hello. Yeah, Rabulan. Yeah, I'm currently no experience for RF. I'm currently working as a NUC on a satellite communication, and I would like to uh, learn about RF. That's why. Okay. Okay. In Thank which you for this country opportunity. you joined? In which country So you I'm belong? from Philippines. Philippines. Okay. Yeah, Okay. Thanks. Appreciate joining with us for today demo. thank I you. hope it's a great day for learning. Then Rahul. Yes, Rahul. Raktim. Raktim Sanyal. Hello, sir. Myself, Proktim Sannal. I am working with Reliance Jio as a RF optimization engineer. You I are have INL or a field engineer? Raktim. field engineer. Field engineer. Field engineer. After listening this word, how you feel like? This is great for me. Great for you. Also, your package greater than 7 or less than 5? Less than 4. Less than 4. Total Mm. experience? 5 years. 5 year. Ratio is not mismatch, huh? Not up to mark. Okay. Now Santosh. Santosh Yadav. Good morning, sir. Yeah, Santosh. Good morning, sir. Yeah, Santosh. Good morning. I think we have already discussion yesterday. Yes, sir. Okay. Now any new candidate joined recently? Ajay Verma. Um, yes, sir. Sir, actually, I have 7+ year of experience in telecom domain, and currently working with Ericsson. In RF Yes, yes, RF planning engineer. planning. No, green pill planning. Lal Nila Pila. Right. Huh? Production. You are working for production. Which tool you are Working for using you. for planning? Currently working for UK project. UK. Which tool you are using for planning? Nemesis ADC build and at all. At all. Okay. I also spent 11 year in Ericsson. Okay, okay, sir. Yeah. I joined as a GT and I Mhm. exit Ericsson as a specialist. Okay, okay. Yes. Now Alhel. Sir. Good afternoon, sir. I Yeah. work in integrated wireless solution in Ericsson 5G project, Geo 5G project as a DT engineer. Total telecom experience is about 7 years, but and as a DT engineer experience is 3 years, sir. Okay. Now Akshay. And also learning protocol testing course, sir. You are already learning. Already, sir, actually joined 1 month ago a course. Okay. After that, your notification came and join your group, community. Okay. So guys, nice discussion. I will discuss a end of the session. So keep here for next 2 hours. We have lots of thing to discuss today. Okay. And okay. So now Fazel. Yes, sir.
Can you hear me? Yes, I'm hearing. Tell me about yourself something so that we can understand. Okay, sir. My name is Mohammed Fazil. I have graduated from Andhra University, Visakhapatnam. I'm from Afghanistan, sir. I'm currently working. I was working as a GT engineer. Now I'm working as a optimization or frequency Okay. optimization engineer. Okay. So guys, we'll catch you later. Enjoy with technical session. Okay. And one more question for everyone. What about your thinking uh, in terms of protocol testing? You have any previous understanding why you have to go for protocol testing? Why everyone is moving towards testing domain from telecom, especially tower telecom engineers? Sir, We have next. I'll here, sir. Yeah, we have next 3 minutes for this discussion. Then we'll start by technical discussion with expert. Okay. So now, yeah, Lal, tell me. I think, sir, as a DT engineer, after protocol testing is a move to your higher level. Like protocol testing is a white collar job, and also there is a very domain. Like every layer is a look like a different engineer needed for every layer. So I think is a better opportunity for the DT engineer to grab it Okay. to choose their better field like protocol testing. Okay. Nice thinking about the technology. Now we'll catch you later. So be available for next 2 hours. Okay. So now, over to Ram. Ram, are you there? Yeah, available. Yeah, over to you. Hey guys, I'm audible for everyone. Yes, sir. Hey guys, Raman is here, and nice to hear about you guys. And so we'll start the technical session. And just I am going to brief myself. Raman is here, and I have approx 10 to 12 years industrial experience in the protocol testing as well as the device testing and modem testing and RAN testing and different project I did here in India as well as the abroad and overseas here. So today we'll enjoy our session and all. Now I'm going to start the things. Okay. So till here, guys, my screen is visible for everyone. Please tell me. The screen is visible for everyone. No, sir. One second. Hey Aarav, can you give me the permission to share the screen? Aarav, are you available? Yes, yes. Okay, okay. Hey guys, now able to see my screen? Yes, visual now. Visible now, no? Oh, sure. Guys, today we'll talk about the protocol testing. What is the protocol and why you are enter in a protocol things? What is the market of the protocol nowadays? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोटोकॉल का मार्केट क्या है, प्रोटोकॉल को कैसे देखते हैं, what is the way to see the protocol and how protocol will be the initialize here, कैसे प्रोटोकॉल काम करता है, हम किस तरीके से किस सेक्टर में काम करते हैं, हमारा डोमेन क्या होता है काम करने का, तो उस चीज को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लुक आउट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को अप्रोच अपना बनाते हैं. ओके, व्हाट इज द आवर टेक्निकल अप्रोच. ओके, सर आवाज ना आ रही है. हेलो
I'm audible or not audible? Please. We can hear you, Audible, sir. sir. Hey, I'm audible for everyone, guys. Please tell me. Hello, guys. Audible. I'm Yes, now audible. now audible, na? It's okay. Okay. So here, guys, our domain is divided in a major three portion. First one is the, you see here. This one is the our domain. Okay. Means the you are working in this domain. This domain is called the telecommunication domain. Okay. So how telecommunication domain is the divided here in a three portion. First one is the, here is the EV side, means the, we can say user equipment. Second portion is the UT-RAN side, here E node B side, we can say this one is the portion of the E node B side. And third one is the EPC side, here we can say this one is the EPC portion. And fourth one is the IP services related parameter, we can say here. And that one is the कम्युनिटी आर्किटेक्चर पोर्शन. ये पोर्शन आर्किटेक्चर में आता है, हम इसको बोलते हैं एलटी आर्किटेक्चर. तो सो हाउ विल गो फॉर दैट थिंग्स. इसमें जैसे आप कैसे काम करते हो, यहाँ पे यूटी रैन पे कैसे काम करते हो, ईपीसी पे कैसे काम करते हैं लोग, आईपी आईपी सर्विसेज पे कैसे काम करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है. यदि हम बात करें कि, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर आ रही है. हाँ, तो इस चीज का डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय द थिंग्स, लाइक सपोज दैट हमें एक यूवी को डिप्लॉय करना है, या हमें नेटवर्क को डिप्लॉय करना है, यहाँ पे नेटवर्क को बनाना है, या हमें ईपीसी पोर्शन के एक एक पोर्शन को बनाना है. इसमें जैसे एमएमई को बनाना है, यहाँ पे एमएमई यू आर गोइंग फॉर द एमएमई को बनाना है, या एचएसएस को बनाना है यहाँ पे, या यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्वर 3GPP सर्वर को बनाना है, या पीडीएन गेटवे को बनाना है, या सर्विंग गेटवे को बनाना है. तो हाउ विल डिप्लॉय, हाउ विल रन द टेक्नोलॉजी, या अदरवाइज यू कैन टॉक अबाउट द पीसीआरएफ रिलेटेड पैरामीटर, इससे रिलेटेड बात करनी है, या आईपी वर्ड से बात करनी है, या वोल्टी आईएमएस की बात करनी है, या इंटरनेट सर्विसेज की बात करनी है. तो कैसे हम इस चीज को कैसे डिप्लॉय करते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द यूवी. यूवी को डिप्लॉय कैसे करते हैं, हाउ विल गो फॉर द यूवी डिप्लॉयमेंट, एंड व्हाट इज द स्टेप्स फॉर द यूवी, हाउ यूवी विल द कम इन द पिक्चर. तो सपोज दैट गाइस, जब हम प्रोटोकॉल लेवल में घुसते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट इज द वे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द डिप्लॉयमेंट थिंग्स. यहाँ पे हम जब डिप्लॉय करते हैं चीजों को, तो उसको सबसे पहले वी आर सीइंग हियर ऑन द ग्राउंड लेवल कि इसमें क्या है, किस तरीके के पैरामीटर हैं, किस किस चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, ओके, सपोज दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर हियर you are the owner, this one is your organization. तो सो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लो कि अभी इंफ्रा का डिप्लॉयमेंट करना है, या आपको ईवी का डिप्लॉयमेंट करना है, या नेटवर्क का करना है, या ईपीसी साइड का करना है, या किसी भी चीज का डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप यू आर रनिंग द बिजनेस ऑन द ग्लोबल लेवल, ग्लोबली आप बिजनेस को रन करते हो, करेक्ट. तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंड दैट टाइम सपोज दैट यू आर मेकिंग वन यूवी. आप ये यूवी एक बना रहे, यूवी का मतलब होता है यूजर इक्विपमेंट, ये इसका मतलब कि ये मोबाइल है आपका. ओके, दिस वन इज योर मोबाइल. ओके, तो सो व्हाट हैपेंड, हाउ यू विल गो फॉर दैट थिंग्स. आप इसमें क्या करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यदि ये डिवाइस बनाना है, यहाँ पे डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करना है इस डिवाइस को, तो कैसे मैन्युफैक्चर करोगे. ओके, तो सो मैन्युफैक्चरिंग हब एक डालोगे, एंड दैट वन इज द बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंट्री. जैसे मान लो कि आपके यूएसए में आपको ये डिवाइस लॉन्च करना है, या इस डिवाइस को लॉन्च करना है इंडिया में लॉन्च करना है, या इस डिवाइस को आपको लॉन्च करना है हांगकांग में लॉन्च करना है. तो या इसको, या अदरवाइज यू कैन लॉन्चिंग फॉर द यूके. तो सो व्हाट हैपेंड, नीड टू डू वन थिंग्स, नीड ऑफ द आरएफ पैरामीटर. इसके लिए आरएफ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ द आरएफ पैरामीटर.
requirement of the RF parameter. Okay, so what we'll do according to the RF parameter, first point you will see the frequency band. What is the supporting band? Suppose that you are going to launch in India, तो then अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इंडिया का RF आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे RF क्या है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है. Lot of the person is working on the this side, so he know कि what is the frequency. तो so यहाँ पे first of all हम बात करेंगे frequency. What is the frequency? And we are talking about the band. What is the band? And another parameters like as a whatever the technology means, the which one technology is the supporting in India. Suppose that here 5G is the supporting, means the supporting technology. Supporting technology. So supporting technology, what is the supporting technology in India? First of all, if you are talking in India, 1G is the supported here, and second thing is the 2G is the supported, 2G technology is the supported. Technology, and here 3G is the supported in India. 3G technology is the supporting in India, and 4G is the supporting in India. 4G technology. 4G technology is the supporting in India now, and you can see here 5G. Here 5G technology. 5G supporting, 5G technology is the supporting in India. So what happened? We will go for the technology wise, and we can launch the device in India. Okay, so how to manufacture the device and what is the procedure to the manufacture the device? So first of all, we two type of the devices is here. यहाँ पे पहला काम क्या होता है, जैसे आपने इस डिवाइस को लॉन्च करने के लिए प्लान किया है, तो यहाँ पे दो तरीके की लॉन्चिंग होती है. पहला चीज कि आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करोगे इस डिवाइस का, तो उसको बोलते हैं ओडीएम मैन्युफैक्चरिंग ODM मैन्युफैक्चरिंग. आफ्टर दैट, आफ्टर ODM we are going सर to ये ओडीएम का मीनिंग क्या होती है? ओडीएम device development is here. I'll tell you, no worry. So ODM is here, and second thing is the OEM. Okay, OEM. So what is the difference between OEM and ODM? So when we are going to manufacture the device, okay, if you are going to manufacture the device, and like as a you are going to manufacturing the device, and means the your device is going to manufacture, so that time main ODM will be the come in the picture. And when we will go for the OEM related parameter like as a Apple, OnePlus, Vivo, Xiaomi, and LG, Lenovo, Motorola, that one is the called the OEM based company. Means suppose that यहाँ पे इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने इसको सेल आउट किया, तो सेल आउट में दिस पॉइंट टू द कम ODM पॉइंट यहाँ पे आता है, एंड OEM इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. तो सो हाउ ODM विल कम इन पिक्चर, आई विल टेल यू हियर कैसे डिवाइस को हम प्रिपेयर करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यहाँ पे देखो गाइस, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल अपना स्नैपड्रैगन 660 मोबाइल प्लेटफॉर्म ओवरव्यू. तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस डिवाइस. इस डिवाइस को हम कैसे यहाँ पे बनाए हैं, हाउ विल गिव दिस शेप. ओके, हाउ विल गिव दिस शेप फॉर द डिवाइस. ओके, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर our RF parameter will be there. Here RF will be there. Okay, then second point is the PMIC integrated codec PMI. Okay, here second thing. Third thing is the codec. What codec we are going to use, like as a
EVS codec, MR codec, MRWB codec, narrowband codec. What codec you are going to use? That one is the separate portion. This one is the separate portion, and this one is the also speaker amplifier is the separate portion, and Wi-Fi you are giving here separately, and then you can go for the touch screen, touch related parameter you can go for the separately. And now we are talking about the near field communication NFC, then high current charging, how you put the charging parameter over there. So we are going for this thing. So our Snapdragon will come in this format. Okay, this one is the Snapdragon, like as a this one is the chipset, and chipset is the always we are keeping inside of the mobile. That one is the green color things. यहाँ पे green color का होता है, उसके अंदर जब आप कवर निकालते हो तो then you can see that one. Okay, तो उसके बाद से क्या होता है कि हमारा डिवाइस इस फॉर्मेट में धीरे धीरे इस फॉर्मेट में आता है. ओके, जब इस फॉर्मेट में आता है तो देन व्हाट हैपेंड, वी विल सी द एटेन्यूएटर एंड ऑल कि एंटीना को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको एटेन्यूएट कैसे किया जाएगा. तो सारी फैसिलिटी हम डिवाइस के अंदर डालते हैं. डिवाइस के अंदर डालने के बाद व्हाट वी कैन सी हियर दैट डिवाइस इज लुक लाइक दैट. उसके बाद से डिवाइस का इस तरीके से डिवाइस टेस्टिंग फेज में आता है. ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग फेज में डिवाइस इज कम इन ए टेस्टिंग फेज. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हाउ डिवाइस विल गोइंग टू लॉन्च, डिवाइस कैसे लॉन्च होती है उसको हम बात करते हैं अभी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सी गाइस, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग पैरामीटर हम लोग को आइरिस कैमरा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज द लाइक एज ए सेंसर टाइप ऑफ द कैमरा. ओके ना, यहाँ पे एक सेंसर होता है जिससे कि आपका डिवाइस इन्वोक होता है, स्लीप मोड में जाता है, वेकअप स्लीप में वेकअप. हियर फ्रंट कैमरा, हियर फ्रंट फ्लैश इज देयर, हियर IR LED यहाँ पे होता है. ठीक है, एंड देन हियर लाउड स्पीकर एंड ईयर स्पाइस मीन्स द यहाँ पे चाहे तो आप you can increase the volume and decrease the volume here also. Here volume up button, and here volume down button is there, and here your slot is there like as a upper slot and lower slot means that you can keep the two SIM card. यहाँ पे दो SIM card होता है, उसको डाल सकते हो. Then USB type, what is the type B or type C you are going to use, that one is the use. Here you one different thing is your commercial device and the testing device debugging port यहाँ पे होता है. We can talk about the debugging port. And now here ये jack होता है, इतने 3.5 mm का jack होता है, stereo jack जिसको बोलते हैं. We can keep here. Then power button, with the help of the power button we can turn on the device and turn off the device. Okay, it's here. Now here mirror button is there and you can focus on that things also. तो so device is come in a picture like as this one. यहाँ पे device का ये होता है, यहाँ पे device ऐसे हमारी आती है कि डिवाइस को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो अब डिवाइस को अब यहाँ पे टेस्टिंग फेज में आया. तो दिस वन इज द पी टैग ऑफ द डिवाइस. यहाँ पे डिवाइस का एक पी टैग होता है, परमानेंट टैग विल बी देयर, एंड देन हियर बैक साइड इज द mic is here and rear camera will be there. Here rear camera and here lesser range finder होता है यहाँ पे. उसके बाद से RCM कौन होता है यहाँ पे, we can see here that thing also. And finally we will go for the antenna related things and we can put the pigtail and all here and we can attenuate the device. यहाँ पे एक डिवाइस को attenuate किया जाता है, लैब टेस्टिंग फेज में आता है यहाँ पे, and then we can also go for the field testing. Till here किसी को डाउट है यहाँ पे? Tell me guys, till here किसी को कोई डाउट है? Okay. No, continue. So किसी ने ODM का नाम पूछा था कि ODM इज द ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर होता है, उसको ODM हम बोलते हैं ओनली. ठीक है, यहाँ पे इस वन द कॉल्ड द हियर ओरिजिनल डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरर. ओके ना, सो वी कैन गो फॉर द ODM. यहाँ पे हमने ODM को बात किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द OEM. व्हाट इज द OEM? सपोज दैट ये चिपसेट बन के रेडी हुआ है यहाँ पे, दिस चिपसेट इज द रेडी फॉर द मार्केट लॉन्चिंग. अब यहाँ पे ये मार्केट लॉन्चिंग के लिए चिपसेट रेडी किया गया. तो अब इसको
अब यहाँ पे इस चिपसेट को क्या करेंगे, हम सेल आउट कर देते हैं। जैसे चिपसेट मेकर कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, एप्पल है, इंटेल है, लॉट ऑफ द कंपनी दैट वन इज द मेकिंग द चिपसेट ओवर देयर। ओके, तो वो जो है कि अपना चिपसेट बनाती है, और ये चिपसेट जब बनने के बाद दैट वन इज गोइंग टू सेल आउट। तो अब इसको सेल आउट किया, किसको सेल आउट किया, ओईएम बेस्ड कंपनी को, ओईएम बेस्ड कंपनी को सेल आउट किया। तो सो उसमें अब आपका आया एप्पल, एप्पल एंड दैट वन इज हैविंग द स्नैपड्रैगन, मींस द इसके पास जो है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जो चिपसेट का वो ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो जो है कि स्नैपड्रैगन होगा। बट यदि आईओ इसके इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दैट वन इज द वर्किंग ऑन द बेस ऑफ द आईओएस, आईओएस पे काम करेगा। सेकंड थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सैमसंग, Samsung SM, and now we are talking about the third point is here. Third point is the Vivo, Vivo and Oppo, and now we can talk about the MI's phone. MI's are the, you can say, Xiaomi phone is there. So that one is the purchase the mobile, purchase the chipset, यहाँ पे chipset को purchase किया। after purchasing the chipset, यहाँ जब chipset उसने purchase किया, that one is going for the application related parameter। यहाँ पे जो है कि वो अपना APK फाइल डालेगा, and after putting the APK file, application file को डाला, APK file is the put it over there, and that one is the fixed one date, fixed one date, and that one is the launch in a market। सो यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया, बट बिफोर दैट वन वी आर गोइंग फॉर द टेस्टिंग। तो सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू टेस्ट द डिवाइस, इस डिवाइस को टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, हाउ विल फॉलो द प्रोसीजर। तो अब इस डिवाइस में क्या क्या फीचर सेट हमने डाला है। अब जैसे दिस वन डिवाइस इज वी आर गोइंग फॉर द लॉन्चिंग फॉर द मार्केट, ये डिवाइस जो है कि मार्केट के लिए हमने लॉन्च किया है यहाँ पे। तो उसके लिए फीचर सेट क्या है, फीचर सेट इसमें क्या क्या रखा है, आखिर में इस किस बेसिस पे इसको खरीदेगा पर्सन, इसी को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस हियर, क्या डिफरेंसेस है कि जिससे कि वो मोबाइल को परचेज करेगा। ओके, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि दिस वन इज द स्नैपड्रैगन X2 LT multi-mode modem, that one is supporting the carrier aggregation, is release is the 13 is the release number, and that one is the supporting the carrier aggregation, means we will get the high data rate। okay, here high data rate 600 mbps with the 256 QAM पे 600 mbps का डाटा रेट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 40 मेगाहर्ट्ज पे जो है कि डाउनलोड की स्पीड इतनी आएगी एंड अपलोड की स्पीड इतनी आएगी, यहाँ पे डिसाइडेड हुआ। तो सो वी आर गेटिंग ऑलवेज, क्या होता है डिफरेंसेस, क्या होता है जब हम डाउनलोड में जी स्पीड हमें हमेशा ज़्यादा मिलती है और अपलोड में हमें स्पीड कम मिलती है। तो सो हियर वी आर गेटिंग द मोर स्पीड, डाटा रेट इज हियर, डाटा वी आर गेटिंग द मोर डाटा रेट हियर, एंड हियर वी आर गेटिंग द लेसर डाटा रेट, यहाँ पे हमको कम डाटा रेट मिला। तो सो अब इसमें क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, ये डिवाइस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी। तो सपोज दैट ये डिवाइस LTE एडवांस सपोर्ट कर रहा है, 3G सपोर्ट कर रहा है, HSPA प्लस में मतलब 3G सपोर्ट करेगा, यहाँ पे UMTS करेगा, CDMA करेगा, TDS CDMA एंड GSM, इतनी टेक्नोलॉजी ये डिवाइस सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग हियर गाइस, नाउ ट्रांसमिशन मोड क्या सपोर्ट करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, एंड EMBMS सर्विसेज मींस द दैट वन इज गोइंग फॉर द डायरेक्ट। इस डिवाइस में ये भी फैसिलिटी है कि ये जियो टीवी जैसे दैट वन इज सपोर्टिंग द EMBMS रिलेटेड फीचर्स, जो भी हमारा फीचर्स है EMBMS का वो उसको सपोर्ट करेगा। एंड टू मेजर फैसिलिटी, IMS कॉल, IMS मींस द बोल्टी सपोर्ट करेगा, बोल्टी में जो है कि बोल्टी HDR वीडियो टेलीफोनिक कॉल भी सपोर्ट करेगा, ऑडियो सपोर्ट करेगा यहाँ पे, एज वेल एज वीडियो सपोर्ट करेगा। तो ऑडियो में गुड क्वालिटी ऑफ द ऑडियो मींस द EVS कोडेक सपोर्ट करेगा, HD ऑडियो करेगा, SVA नेक्स्ट जनरेशन फ्लुएंस एंड फ्लुएंस PRO सपोर्ट करेगा, एंड देन हियर कोडेक यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की कोडेक रहेगा 4K 30, एंड दैट वन सपोर्ट 4K 30 डिकोडेड फॉर्मेट एंड कोडेड फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में ये सपोर्ट करेगा। ओके, तो सो हाउ
दैट वन इज कम इन टेस्टिंग फेज। अब इसको हमें टेस्टिंग फेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो गाइस, डिवाइस को टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे जब फोन को आप टेस्टिंग कैसे करते हो, फोन को प्रोटोकॉल लेवल पे कैसे लाते हो, ठीक है। तो जब ये फोन बन के यहाँ पे रेडी हो गया आपके पास, यहाँ पे ये फोन बन के रेडी हो गया, तो उसको अब टेस्टिंग करना है, ठीक ना। तो हाउ यू टेस्ट द फोन, यहाँ पे टेस्ट फोन, फोन को कैसे टेस्ट करोगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू टेस्ट द फोन। तो अब फोन को टेस्टिंग करने का दिस वन इज द प्रोसीजर, फैक्ट्री रिलीज। अब यहाँ से फैक्ट्री से जो मैन्युफैक्चरिंग बन करके रेडी हुआ, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द फील्ड टेस्टिंग एंड लैब टेस्टिंग। तो यहाँ पे दो तरीके की टेस्टिंग जनरेट करेंगे। यहाँ पे पहले इस डिवाइस को फील्ड टेस्टिंग करेंगे, फील्ड में इसको देखेंगे कि आरएफ पैरामीटर कैसा है। यहाँ पे ध्यान से सुनो गाइस, इसको सबसे पहले फील्ड टेस्टिंग में ले जाएंगे। फील्ड टेस्टिंग में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हाउ कैसे टेस्ट करेंगे डिवाइस को। फील्ड टेस्टिंग में कोई फील्ड टेस्टिंग करता है यहाँ पे, कोई फील्ड टेस्टिंग करता है यहाँ पे, जिसने में ज्वाइन किया हो आप लोग, कोई फील्ड टेस्टिंग करता है, यस और नो? Yes. हाँ, व्हाट यू आर डूइंग इन Sir. Yes, Yes, I'm yeah. doing. टेल मी। Sir, what kind of the information we use the temp discovery or temp investigation or XCall, that software, and connected with that laptop that are installed in the laptop, the software, and we use these and for the RF field. I am basically RF engineer, and I have a interview scheduled 29 for the extension company. Okay, no issue. Thank you. So what happened here? We'll check the RF parameter. So RF, RP, SNR. We'll talk about the frequency, and we can also talk about, just a moment, what is the frequency is here, and we can talk about the band. What is the band? We will go for the reselection, redirection related parameter. Reselection, redirection, the handover, and we can go for the like as a rat handover, and we can also go for the band handover, correct, huh? And we can go for the PS handover, PSHO, and we can also go for the CSHO, correct. So we will check the different of the parameters, and another point we can check here, call rate, and CSFB. CSFB we can check, SRVCC we can check, SRVCC we can check. We can also check the data rate, how much data rate throughput you can check. So these point will be communicated. इस टेस्टिंग फेज में आपका आ जाता है फील्ड टेस्टिंग में। ओके, दिस पॉइंट इज द कंप्लीट फील्ड टेस्टिंग। अब यहाँ पे इस फील्ड टेस्टिंग आपने किया, नाउ वी विल गो फॉर द लैब टेस्टिंग। अब यहाँ पे लैब टेस्टिंग के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको सिमुलेटर लगा देते हैं। यहाँ पे दिस वन इज अ लाइव नेटवर्क। यहाँ पे ये नेटवर्क, ये डिवाइस आपका लाइव नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे सी हियर, दिस डिवाइस इज कनेक्टेड विद द लाइव नेटवर्क। यहाँ पे लाइव नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, एंड वी आर जस्ट अ मोमेंट वेट प्लीज, sorry, charger is not there. So device is connected with the live network here live network, and we are getting the uplink and downlink messages from the network. Okay na, network यहाँ पे downlink message भेजता है, and we will send the uplink message here, downlink, and here we are talking about the uplink मैसेज। ओके, तो सो व्हाट हैपेंड, अब आगे का फेज क्या स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट रेडीनेस एक्सेप्टेंस, इसको पीआरए बोलते हैं। पीआरए फेज के लिए गया, पीआरए फेज में उसको अब एक्सेप्टेंस की बात आई कि हाँ ये
एक्सेप्टेंस कैसे होगा, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द लैब एंट्री। लैब एंट्री में लाते हैं डिवाइस को, तो लैब में क्या करते हैं, लैब में यहाँ पे तो नेटवर्क इज द रिस्पॉन्सिबल। अब ये डिवाइस है आपका, तो डिवाइस को लैब में लाते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमारे पास सिमुलेटर होता है, यहाँ पे सिमुलेटर होगा, सिमुलेटर लॉट ऑफ द सिमुलेटर इज द अवेलेबल इन लैब। बहुत सारे सिमुलेटर्स होते हैं, उस सिमुलेटर्स को अब जैसे एंड्रस 2 का हो गया, कीसाइड का हो गया, आरएनएस का हो गया, CMW500 हो गया, तो लॉट ऑफ द सिमुलेटर इज हियर एंड वी कैन कनेक्ट द डिवाइस। अब ये सिमुलेटर नेटवर्क का काम करता है यहाँ पे। दिस वन इज द फोर फॉर द LT। हियर हियर आ गया आपका, ये ऐसे सिमुलेटर होता है, एंड सिमुलेटर में 8 पोर्ट होते हैं, इनपुट होता है एंड 8 आउटपुट होता है। तो अब इसको क्या होगा, यहाँ पे सिमुलेटर जैसे मान लो कि आपका लगा हुआ है, यहाँ पे सिमुलेटर है, ये दिस वन इज द सिमुलेटर, दिस वन इज द सिमुलेटर। तो अब इसमें से जो पिक्टेल निकाल करके आप इसको RF पैरामीटर को मैनेज कर लोगे। यहाँ पे दिस वन इज द RF पैरामीटर, दिस वन इज द RF पैरामीटर एंड दिस वन इज द आल्सो RF पैरामीटर। तो RF से करके इसकी कंट्रोलिंग करके एंड यू कैन गो फॉर द डिवाइस टेस्टिंग इन ए लैब सिचुएशन। अब यहाँ पे लैब सिचुएशन में डिवाइस को टेस्टिंग कर देते हो, ठीक है। अब ये हियर आया, मतलब जो जिस तरीके का अब इश्यू आया, इशू क्या आया यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे इशू आया, इशू रेजोल्यूशन। अब जैसे कोई काम यहाँ पे कर रहे हो, जैसे CSFB किया, CSFB, the device is the means the perform the CSFB, but what happened, we are getting the failure। जैसे सपोज दैट आपने LT पे कॉल किया एंड डिवाइस इज नॉट सपोर्टिंग द LT नेटवर्क हियर। अब जैसे LT पे कॉल किया, LT नेटवर्क पे, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हियर एग्जांपल लिया हमने, क्या एग्जांपल लिया कि कॉल इनिशिएटेड ओवर द LT टेक्नोलॉजी, LT टेक पे कॉल किया, तो LT आपका कॉलिंग फैसिलिटी नहीं सपोर्ट करता है। जो LT में हम कॉल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये LT केवल डाटा के लिए होता है, नो कॉल, ओनली डाटा, करेक्ट। तो यहाँ पे यदि ओनली डाटा है आपके पास, तो आप कॉल नहीं कर पाओगे। तो सो व्हाट हैपन, दैट टाइम CSFB टेक्नोलॉजी विल बी द इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जब कॉल के लिए आप जाओगे, यहाँ पे कॉल के लिए, तो CSFB टेक्नोलॉजी को यूज करोगे यहाँ पे। तो CSFB टेक्नोलॉजी कहता है यहाँ पे कि दैट वन इज द रीडायरेक्ट ओवर द 3G और 3G और 2G नेटवर्क। यहाँ पे 2G नेटवर्क पे फॉल बैक हो जाएगा, फॉल बैक हुआ। बट जब वो 2G और 3G नेटवर्क में फॉल बैक होता है, तो क्या हम करते हैं कि इसके सेल को एक्वायर करेगा, ये LT सेल को छोड़ेगा और 2G और 3G के सेल को एक्वायर करेगा। बट यहाँ पे सेल एक्वाइजेशन फेलियर आ रहा है, जिसकी वजह से वो CSFB परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे फेलियर हमने पाया, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेलियर है, तो इस फेलियर को हम इशू रिजोल्यूशन के नाम से बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू रिजोल्यूट दैट थिंग। अब यहाँ पे इशू रिजोल्यूट करके उसके लिए हम सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं एंड देन वी कैन गो फॉर द फॉर्मवेयर, फाइनल गो फॉर द फॉर्मवेयर टीम एंड टेक्निकल अप्रूवल लेते हैं उसका, फिर लॉन्च उसको करते हैं, देन MR मेंटेनेंस रिलीज कर देते हैं उसको, मेंटेनेंस रिलीजिंग एंड दैट वन इज अ फिक्स वन डेट, एक डेट फिक्स करता है, देन वी कैन गो फॉर द रिलीज द डिवाइस एंड दैट वन इज द कम इन ए पिक्चर ऑफ द कस्टमर रिलीज। अब इसको हम बोलते हैं कि ये डिवाइस कस्टमर रिलीज पे चला गया। टिल हियर किसी को डाउट हो रहा है कहीं पे यहाँ पे? ओके तो शो जब डिवाइस आपका कस्टमर रिलीज पे आया, तो सो हम वी आर गोइंग फॉर द टेक्नोलॉजी वाइज, हम टेक्नोलॉजिकल बात करते हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइस इज द कम इन कस्टमर रिलीज, अब यहाँ पे एक कस्टमर के पास ये डिवाइस यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इज द वे, इज द इन इंडिया वी आर सपोर्टिंग total 5 technology here, 1G, and here if you are talking the second thing, you are talking 2G, and here 3G technology is here also. Here this one is the 3G technology, and here we will move for the 4G technology. Here this one is the 4G technology. Here so
हम कैसे अपनी अप्रोच को बढ़ाएंगे, टेक्निकल अप्रोच को कैसे यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करेंगे, व्हाट इज द वे टू द इंक्रीज द टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्निकल अप्रोच को कैसे बढ़ाते हैं, हम जॉब ओरिएंटेड कैसे जाएंगे कि हमको जॉब लेना है, किस टेक्नोलॉजी में जॉब लेना है। यदि हमको कोई एक टेक्नोलॉजी आती है ढंग से, तो देन वी कैन गो फॉर द जॉब ओरिएंटेड रिलेटेड थिंग। सो हियर गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर। So first of all here I'm talking about the 1G technology. So what is the 1G technology? So 1G technology जब हमारा आया था starting में, so this one is the analog system. Okay, that one is not a digitally not a form. Okay, analog system था, and we have the radiating in the form of the analog when we are talking about the signaling. यदि हम signaling की बात करते हैं तो signaling में केवल analog system था, digital system is not come in the picture. इसमें हमें डाटा का कोई एक्सपेक्टेशन, हमने डाटा की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि 1G टेक्नोलॉजी में हमें डाटा नहीं मिला था। इट्स नॉट converted to the digital words. Okay, only that one is converted in the analog system, and we are not expecting the any data rate. So whatever the facility will be there, like the mailing, Gmail system, download, upload system will be there, that one is not working. And so here we are not cover the long distance in the communication system. हम communication system की यदि बात करते हैं, जैसे पार्टी ए यहाँ पे है, this one is the party A and this one is the party B. तो so what happened here, this one is not a wireless technology, this one is the wired technology. We can say here, like as I suppose that if we want to go to the party A to party B here, that's only the network is there, and means the through the wire we can go for that. Okay, here like as here is the party A, here is the A, and here is the B. If party A is the want to call to the party B, that time what happened, we have the wired communication that time. Here this one wire is connecting this one there, and we can go there, and we can go over there, and we can utilize. So where we will spread the wire, we can only make the call on that place. Okay, जहां तक हमारा वायर जाता है वहां तक हम कॉल को कर सकते हैं। Here not cover the long distance in this communication system. तो हम इस communication system में पार्टी ए पार्टी बी तक ही communication करते हैं। That one is a shorter distance. Okay, party A, and here this one is the party B. Party B. So what is the another technology? जब दूसरी टेक्नोलॉजी को इनहांस किया, दूसरी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया, तो what is the differences we are getting here? दूसरा differences क्या मिला हमको? So please mute guys. One this mic is unmute. Please mute. Who's the unmuted? Please mute. Name. Please mute guys. Whoever the unmute, and I requested to you, you can mute. Okay. तो so what happened? दूसरा चीज यहाँ पे क्या हुआ? जब हम 2G टेक्नोलॉजी में गए, तो so 2G technology is the really different thing for us. Here, this 2G is the digital system, and it's covered to the digital to analog system. Means we are getting the facility to the cover the digital to analog and analog to digital. And most important parameter is here guys, 2G technology. Here 2G technology is the circuit switch based. We are talking about the CS based. Okay, na? So CS is the introduced here, and now 2G is the known as the GSM technique here, global system for mobile communication, and now GSM is the successful technology in a 2G techniques and voice communication. जो voice communication के लिए हमने GSM technology को लाया, but हमें data enhance करना था. What is the main goal for the device testing and a device paging? Here we need to increase the data inside of the mobile. यहाँ पे main purpose था हमारा कि हमारा data rate, we can increase the data rate. डाटा रेट हमको बढ़ाना था, तो डाटा रेट के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया था उसमें 2.5G को लाया था यहाँ पे हमने,
2.5G टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं GPRS टेक्निक। एंड यहाँ पे दूसरी जो टेक्निक लाया हमने 2.7G टेक्नोलॉजी को लाया, उसमें हमने जो डाटा रेट को अलग अचीव किया, उसको बोले हम एज। ओके, इनहांस्ड डाटा रेट वी आर गेटिंग ओवर देयर। ओके, तो अब देखो गाइस, यहाँ पे पहला चीज आया हमारा, वी आर टॉकिंग अबाउट द GPRS. GPRS is here, and second thing is the edge. Is edge here. So we are increasing the data rate here. How? See here, GPRS is the stand for the Global General Packet Radio Services is here, and second point is the radio packet is the transfer through the over the air, means the what OTA message over the air. यहाँ पे concept क्या है कि हमारा जो device connectivity मिलेगी, wireless connection we are getting here. This one is the wireless connection, and here point is going to radiated here. Cell ID will be there. This one is the cell ID, and this one is the cell ID, and this one is the cell ID, this one is the cell ID, and we can utilize device is the power on, and that one is the camp over this network, and camp over this network, and camp over this PCI, physical cell ID, and this PCI, and we can utilize the data rate. ओके, तो यहाँ पे हमने इस डाटा रेट को यूटिलाइज किया, डेडिकेटेड कनेक्शन। ओके ना, इन वी आर यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा डाटा रेट क्या है, GPRS में हमारा 56.64 डाटा रेट वी आर गेनिंग हियर, बट इन एज में हमने डाटा रेट को और इंक्रीज किया। बट व्हाट हैपेंड इन 3G टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ तक आए, फिर 3G टेक्नोलॉजी में हम आए तो डाटा का ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द डाटा। जो हमें kbps में स्पीड यहाँ पे मिल रही थी गाइस, यहाँ पे वी आर गेटिंग स्पीड इन 3G टेक्नोलॉजी, वी आर गेटिंग द ग्रेटर स्पीड हियर। 3G में हमने 250 and 384 kbps का स्पीड आया, बट व्हाट हैपेंड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द maximum data rate we are getting in a 3G technology, 2 Mbps data rate मिला हमको, HSPA में data rate मिला। हमें फीचर सेट क्या इसमें इंक्लूड हुआ, देखो यहाँ पे UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेरेस्ट्रियल telecommunication system, you can call the UMTS, and another name is the WCDMA. The WCDMA is wideband code division multiple access. If we are the out of the India, then we can see here कि this one is the other name is the HRPD. HRPD is here. That one is also stand for the 3G technology here, and you can say enhanced data, enhanced purpose EHRPD. So in EHRPD is the also called the 3G, but this one is the in the advanced data rate version. So what is the feature set is the added in this side of the mobile? इस मोबाइल में हमारा फीचर सेट क्या ऐड हुआ, फीचर सेट included in the 3G technology is the video calling facility, YouTube streaming and IP call system and cricket match streaming, you can see here. So यहाँ पे हमने data, what we are going to increase the data technology over here. Okay, so first of all here, for the first thing is here we are talking about the 3G. Here is the 3G, यहाँ पे 3G था, and then we can talk about the HSPA. Okay, so here we are getting the expecting the data rate. Data is the 384 kbps. kbps data rate we are getting, but if you are talking about the HSPA, means the HSPA plus is here. So we are expecting data rate. Excuse me, sir. 2 Mbps. Yes, please. Tell me. ये HRPD R99 को आप HRPD कह रहे हैं, right? या something else? हाँ, HRPD. Like as another, if you go for the legacy terms, then you can say CDMA and eVideo concept will come in the picture, like as USA techniques. Okay ना, वहाँ पे USA के terms में USA इस टर्म में यूज करता है 3G टेक्नोलॉजी को, ठीक ना। HRPD एंड HRPD के टर्म्स में हम इंडिया में क्या करते हैं, उसको 3G बोलते हैं और H+ बोलते हैं, या उसको HSPA बोलते हैं, ठीक है।
Okay, got it. Thank you. HSPA प्लस फॉर्मेट में होता है. हर एवरी टेक्नोलॉजी के दो पैरामीटर होते हैं. वी आर इंक्रीजिंग द डाटा रेट इन टू वे. What is the way? Like suppose that I am taking here 2G, here this one is the 3G, this one is the 4G, and this one is the 5G. So what happened? How data will be the increases over there? तो जैसे मान लो टू every technology is here. I am talking about the 2G technology, and here we are talking about the 3G technology. 3G technology, and here is the 4G technology, and here this one is the 5G technology. Here 5G. So what happened? Always our main goal is to increase the data rate. Here 2G and here 2G advanced. We are talking here 4G and here 4G data rate advanced format. We are getting here 5G and 5G data rate increased format. So what? Here if you are talking here GPRS. Okay. So here we are getting the data rate. How much data rate? 6.64 kbps. Correct? Here, but when we enter in the edge technique, so data rate will be increased 170 kbps. And here, if you are talking about the 3G techniques, we are getting the 384 kbps data rate. But in case of the H plus SPA, means that we can say here plus, so data rate will be the increase here to Mbps. Data rate is the increasing the data rate. Now here in 4G we are getting data rate here 100 Mbps. Mbps is here. But in case of the here 4G, you are getting, like as you can say LTE technology, you are getting the data rate is here. Like as a 4G, you are getting 100 Mbps. But in case of the LTE advanced, we are getting, you can say CX situation. 4G plus. We can say 4G plus. We are getting a data rate, peak data rate. Peak data rate, we are getting the 300 Mbps. Okay, here we are getting the 300. Here, two technology is the first one is the NSA here, and second one is the SA. Standalone and non-standalone, and here we are getting the data rate. 1 Gbps data rate is here and the 10 Gbps data rate is here. So this one is the concept of the data rate. Hey guys, this point is clear for everyone. Here this one for the LT representing to the LT, this one is the representing to the 3G highest data, this one is the lower data. Here 2G is the highest data, and here is the lower data. I hope so this point is clear for everyone. सर एक चीज सर हाँ बोलिए. अच्छा, ये जो LTE में ना 100 Mbps है, ये कितने मेगाहर्ट्ज पे हम अचीव करते हैं ना? 20 20 मेगाहर्ट्ज के. जैसे यहाँ पे बैंडविड्थ होती है बॉस, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंडविड्थ. जी सर, वो बस थोड़ा के लिए 20 पे. और दूसरी चीज, जो LTE एडवांस में हम 300 Mbps कर रहे हैं ना, तो इसमें कितनी बैंडविड्थ के कैरी, कितनी माइमो की सिचुएशन पे आप आते हो. उसमें माइमो की देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो. जैसे यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज दिया, 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ. तो सो वी आर एक्सपेक्टिंग द 100 रिसोर्स ब्लॉक, 100 RB will be allocate over there. Okay, 100 RB will be allocate there, and we are getting the maximum data rate is the 100 Mbps. Correct? Clear? Right. But in case of the peak data rate, means the high data rate,
So what happened if you are expecting the high data rate? So what happened here? Up to 300 Mbps we are getting. 300 Mbps. Mbps data rate you are getting. How we are getting the 300 Mbps data rate on the 20 megahertz frequency. Megahertz frequency on the 4x4 MIMO. अब 4x4 Okay. MIMO की situation पे we are gathering this peak data rate. Okay. Okay, thank you. अच्छा, in terms of carrier aggregation, कितने carriers पे हम 300 megahertz achieve करते हैं? See, boss, here, suppose that your device is the supporting here the carrier aggregation, like as a, here, this one is your device and this one is your network is here. So first of all, 5 carrier is the over there. Okay, one for the PCC here primary carrier component, and the secondary carrier 1, 2, 3, and 4 carrier will be added for the as a secondary, one for the primary. So your device is the first cap over this one. P cell primary cell पे camp होगा here, and after that as per the data requirement the device is going to add the secondary S1, S2, S3 and S4. So here primary PCC in a CS situation we will move for the one PCC primary carrier component and 4 SCC, correct? So this is the Oh. CS situation. Okay. Okay. How many can be added at max? Secondary 4. carrier. 4. 4. Okay. 4 maximum can add. Here, see na. I'm taking Okay, example of the 4. Okay. Great. We can great, add only great, 4. Okay. Great. Thank you. Here 4 we can add, and here this one is the P cell only. Primary cell is here. Just a moment. Here P cell, and here SL1, SL1. Here we can say SL2, 2, and here you can say SL3, 3, and here you can say SL4, 4. Correct? So, just a moment, guys. So, delivery boy is waiting outside. I'm coming in 2 minutes only. Sorry for that thing, guys. I'm audible for everyone. Please. Yes, tell me, guys. So Yes. this one is the revolution. This one is the revolution of the things here. How we are going to higher data rate. Means the every technology. What is the need to deploy the things? Means we will achieve the high data rate and high throughput and high voice quality. Okay, ना? हमारा main purpose है कि we can increase the data rate and all. Okay, every technology will be the give the high data rate that we are going to deploy. Okay, so what happened? We will categorize the things here. Suppose that in a 4G things, what is the release information? Release information like as a technological release, like as a we are talking about the release. Please mute, guys, please.
release 8, and we can go for the release 9, release 10. Release 10 is here, and here is release 11, release 12, release 13, and here release 14. So what is the mean of the release? Release 14, 15, 16. So inside of the release, we are increasing the category and all. Okay. So for example, I am taking the example for the category release. Okay. Here, see Sir, guys here. sir, हाँ बोलिए. sir, if you could you please explain the 5G data rates also, then it would be quite satisfactory for Sure, us. sure. 5G data rate. If you are talking about the 5G data rate, then we will go for the 1 Gbps data rate. Okay, na? 1 Gbps data rate we are expecting over there. Okay. In a training session, we are Okay. not going to explain the each and everything. So, okay. But I am just only Okay. giving the overview is here. Okay. Sure, sure. Okay. So here, this one is the release information. Here we are going for the release 8. सर एक क्वेश्चन है. Yes, tell me. हेलो Tell me the question. सर ये प्रोटोकॉल जो टेस्टिंग होता है सारे मोबाइल का होता है कि कुछ जो मैन्युफैक्चर होता है कुछ मोबाइल्स को का सैंपल्स ले लिया जाता है कि सारे मोबाइल्स का होता है? अभी हम मार्केट आते हैं में उस पॉइंट पे आते हैं. वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर है जो भी आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर हुआ ना, सबका प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता है. जो भी अभी हर एक मोबाइल का. हाँ, जिस भी मोबाइल में आपको टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आ गए, उनका सबका प्रोटोकॉल टेस्टिंग होना ही होना है. ठीक ना. अब जैसे आपने एक बैंड खरीदा, एक वॉच खरीदा, ठीक ना. तो अब उस वॉच ने आपको ये. हेलो. हाँ, आवाज आ रही है. हाँ, अभी आ रही है. हाँ, ये आपने वॉच खरीदा, ठीक है. यहाँ पे ये वॉच खरीदा. तो अब ये दिस वन इज द IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, IoT बेस्ड वॉच है. तो आप इसका बोल रहे हो कि इसका टेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो मेरा कहने का मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चर में तो एक तो नहीं होता होगा, पूरा हजारों लाखों के संख्या में होता होगा. तो हजारों लाखों का एक मोबाइल्स का होता है या एक इक्विपमेंट का होता है कि उसका कुछ सैंपल्स ले जाता है, 10, 12, 15 ले लिया जाता है, नहीं. उसी का टेस्टिंग. इसमें क्या होता है कि एक जो सीरीज होती है, ठीक ना. ये सीरीज है. जैसे अभी हमने बताया कि 660 सीरीज है. तो इसके क्या हुआ कि 10 सैंपल की टेस्टिंग हो जाएगी, या 20 सैंपल या 50 सैंपल की टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक ना. 50 सैंपल की टेस्टिंग हो जाएगी. और इस टेस्टिंग के लिए क्या होगा कि हमने सॉफ्टवेयर रिलीज कर देना है. तो जब सॉफ्टवेयर इस टेस्टिंग में, अब तो आपको 50 डिवाइसेस लिया आपने, तो 50 डिवाइसेस में आपने देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है. एक दो डिवाइस में प्रॉब्लम आएगी. तो जैसे आपने यहाँ पे 5 डिवाइस लिया, 5 डिवाइस में प्रॉब्लम आई, सेम प्रॉब्लम नहीं आ रही. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? Because other side is the joined from the another country, that's why he is the facing problem to understand the things. Okay na. So what happened if you are taking the 50 sample, okay na. So what happened in a 50 sample, you are testing, the maximum testing is the done. ओके ना. यहाँ पे मैक्सिमम चीजों को हम लोग चेकआउट कर देते हैं. जैसे डाटा स्पीड देख लिया, RF पैरामीटर देख लिया, कॉल सिनेरियो देख लिया, CSMA देख लिया. जितने फीचर्स हैं उतने फीचर को हम 50 सैंपल में टेस्ट कर लिया और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया. एंड दैट वन इज द वर्किंग फॉर द 50 लाख फोन. ओके ना. ओके सर, समझ में आया पॉइंट. और दिस वन इज द डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर अपग्रेड. ओके. I hope so. This point is okay, clear. Sir. Okay. So now, again, we'll move further. We'll move. So here, we are talking about the release information. How we'll go for the release related things here. So release 8 is the giving this information, and release 9 is the like as a self-optimization related, network related things we are getting. And if you are talking about the release 10 for the carrier aggregation, and your category is the aided, EV category is the aided here, like 6, 7, 8.
और यदि LT की बात करते हो आप, तो LT में ये जो हमारी टेक्नोलॉजी थी 4 5 कैटेगरी को ही यूज किया था, बट in terms of the LT advanced, you are using the 6 7 8 category over there. Okay, now in we are talking about the release 11. Release Sir, 11, we have the so question, technical discussion. Okay, no worry, बस need to speak up about that things. Okay, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Yeah, please tell me. ओके ओके, ये जो रिलीजेस हैं और कैटेगरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Boss, रिलीज एंड कैटेगरी? boss. Okay, after this I can go for that things. Okay, okay, sure. If it is coming, Give me only 2 minutes. Give me only 2 minutes. I'll come back on that things. Okay. okay. So here release information, release 12 is the giving the information about the LTE advance and radio evolution. What radio you are going to evaluate that thing there, and then here we are talking about the release information, release category information. So here release category information will come in the picture of the release 12 EV category is the if you are talking about the EV categories, so EV category is the representing here 13 14 13 will become 14 and 15 and 16 will become in the inside of the release. Okay, now you are talking about the release 14 13, so inside of the release 13 here we are talking about the release 13 here LT license spectrum and carrier aggregation enhancement and machine type communication means they come in the picture of the release 13. Release 13 में machine to machine communication का system आया था, but that one is the MTC communication will be there, but that one is the fully deployed in release 14. Release 14 में machine to machine communication, vehicle to vehicle communication, vehicle to X means the here V2V. Here we can see here V2V and V2X here. So what is the mean of the V2X? Means the vehicle to X matlab other accessories. Okay, and V2V matlab vehicle to vehicle. Like the same things here. 4 band carrier aggregation. EV category 19 will come in the picture here, and we can go for that things like a EV 19 category will come here. What is the EV category? This one is your concern, na? So here, suppose that we are launching this device. किसका क्वेश्चन था ये? Name please. My question. This is Zohaib. Name. I'm asking your name. Zohaib. Okay. See here. What is the category is here? Means that you are talking about the EV category. So category is the decided to what parameter I am supporting. Parameter supported. So suppose that here your category is the 4 5. So we are categorized here. Category is the 4 and 5. So this technology is the only support जहाँ पे ये EV के पास category 4 and category 5 होगा, वो केवल LT ही support करेगा. उसको आप सोचो कि नहीं ये LT advanced support करे, LT advanced को support करे, तो so that one is not supported, not supporting. Okay ना, not supporting. Okay, इसके लिए यदि LT एडवांस की बात करते हो यहाँ पे LT एडवांस की बात करते हो तो सो वी कैन गो फॉर द फर्दर कैटेगरी. मतलब यहाँ पे 6 7 and 8 is the supporting the LT advance. If you go for the 5G, then category will be also change. I hope so this point is clear. No, क्वेश्चन वाज दैट कि जो रिलीजेस होते हैं ना वो क्या नेटवर्क साइड होते हैं और कैटेगरीज क्या यूई साइड होते हैं? इज इट दैट और आई एम नो ये यूई साइड में होता है, ठीक ना. सबसे पहले जब इस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन को आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क इज द इंक्वायरी अबाउट दैट थिंग्स. हे व्हाट यू आर सपोर्टिंग इज द यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी. सपोज दैट हियर इज द योर नेटवर्क इज here is your network. Okay, and so what happened here, network is the sending one information to the EV capability inquiry. After that you will be sending the EV capability information, and after that you can check this information. If you want to see, then you can see here. I'll tell you.
I'm going to replay the one log file and I'll show this information. But this one is your advanced information. Okay, we are not going to explain this thing in a training portion. Okay, I want to show Yeah, you. yeah, yeah, yeah. No issue. No issue. Thank you. Oh, FGI, I think there is a future guide indicator. There is a message. Indicator is the different things, and this one is the category information is the different things. Okay. I'll show you. This one is the ELT tool is here, and I'll show this information here. See, this one is the category information, UV capability inquiry and information. The see here. This one is the inquiry from the network side. Okay. This one is the UV capability inquiry. This one is the information. So inside of the information, you will get this. You will get your point. Okay. This one is the category information. See here. See category 4. Understood my point? Yeah. Okay. Thank you. So these are the points, guys, here till here. And now, if I am talking about this portion here, how after that network will be deploy here. So first of all, network will be deploy, then UV will deploy, and then we can go for the EPC side of EPC side with the deploy. So now I'll come in a I'll try to elaborate the point is here. Why you are coming here? Why you are going to join here? Why you are join this organization? Okay. So in this organization, we are talking about the basic points. Okay, basic point to the top point. Okay, here inside we had a discussion on that point कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजिकल अप्रोच रखते हैं. यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे फिट आउट किया जाए, किसी भी बंदे के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी को फिट आउट करते हैं. वी आर वर्किंग मीन्स we are the working professional in another organization. So what happened here? We are going for the protocol testing, 4G and 5G testing we are doing here. ओके, तो इनसाइड ऑफ द 4G 5G टेस्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्या अप्रोचेस बनाते हैं, कैसे किसी को ये टेक्नोलॉजी फीड आउट करना है, कैसे बताते हैं. तो इस टेक्नोलॉजी को हम प्रोटोकॉल टेस्टिंग पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर गोइंग फॉर द हाउ टू डू द प्रोटोकॉल टेस्टिंग इनसाइड ऑफ द organization. इस organization के अंदर आते हो तो how will test these things. Okay, so quality classes for the professionals, how will provide the quality classes here. So suppose that you are different people is here, like as here this one is the market and this one is the world guys here. Globally our organization is the joined by the global student. Globally student is the joined. See the one guys is the joined from the Philippines, Jakarta, Surabaya, and Vietnam, and you can say UK, US. So a lot of the guys in the different places, and they are taking the classes, our classes related to the 4G and 5G on the base of the protocol testing. So what is the benefit? Why globally person is going to join? हम लोग हमारी क्लास को ग्लोबली पर्सन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हियर? सपोज दैट गाइस आपको यहाँ पे कोई भी आपको टीच आउट कर दे एलटी प्रोटोकॉल, एलटी टेस्टिंग, एलटी टेस्टिंग आपको यहाँ पे कोई सिखा दिया. सपोज दैट पावर ऑन प्रोसीजर, पावर ऑन प्रोसीजर सिखा दिया, उसमें आपको सिखा दिया रैट प्रोसेस. I'm taking an example. Process. But what is the main key of the file? How rats will come in the picture? What is the layer information? So suppose that we are providing, means here I'm providing the information on the ground level. That's how that on the work. Suppose that here is the UV. UV is here, and here is the network. So here is the UV, and here is the network. So network is the first of all sending the downlink information. Downlink information is the shared here. Downlink information. After that, you will send the uplink information. How? Suppose that here frequent means the here
UV and protocol initialization will be the coming in picture. So point number 1, in a downlink format, what message you will receive? DL message हमको क्या मिलेगा? Downlink message. First one is the protocol initialization. Protocol initialization, and second things we are going for the after protocol initialization we will talking about the system scanning and banding scanning. And scanning, and then we will move for the third number. It's here. Third point is the frequency. Frequency SEQ. Association, and then PSS and SSS will be the coming picture. Means the decoding parameter. Decoding. Decoding means what? PSS decoding, SSS decoding, and MIB decoding, and SIB decoding. Then our device will go for the RAS procedure. Then here RAS procedure. That process will be the happen here. So how? If I'm talking about the layer information, where is the RAS is the working? So RAS is the working first file layer. Second, that one is the attempt and trigger by the MAC layer, and controlling by the RRC layer. So protocol will be the coming picture here. If I'm talking about the RAS messages, that message, so that on message 1, like the message 2, message 3, message 4, here on the file layer, physical layer, and control here, attempt and RAS attempt and trigger, and trigger. So I'm taking the name of the MAC layer. So if we are talking about the RAS controlling, so RRC is the responsible for the RAS controlling. So this type of the information we are shared. Every organization is sharing this type of the information. But what we are going to share the different point is here. Different हम लोग क्या share करते हैं यहाँ पे? We are talking about the RAS points. Our point is going to start from the day one. We are going for the tool का hands on experience हम देते हैं. हमारे पास we are having the different of the tool here. 4 to 5 tool is here, and we will show today the tool information. What is the tool? First of all, we are talking about the ELT tool, MediaTek tool. After that, we will move for the QXDM tool. And then, hey Aarav, please open the QXDM tool. In the next 5 minutes we will work on the QXDM tool. Please open the QXDM tool. After that, you can go for the. Thank you. Here we will go for the replay the one log also. Here we are talking about the QXDM tool, and here QCAT, and after that we will move for the WATSARC. WATSARC is here, and we are try to analyze the log over there, how our flow will be there. Suppose that our device is a camp over the network, what is the flow and what is the failure causing? Why device is not going to camp over the network, and why that one is the failure? So we are more focusing over the failure cases. Okay, failure cases here. See, here we are not going to do the fake promises. हम लोग यहाँ पे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं. वी आर टू बी ऑनेस्ट. इफ स्टूडेंट विल बी द कम, आवर डिलीवरी विल बी द 100%. Means the delivery will be the 100%, and if you are regular, then you will get the good organization in the next 3 months. Next 3 months we are try to finish our course, and this one is our course map is there. So this theory concept we are discussing here. In the plus 15 industry experience experts is there who is know the fill the gap, how to fill the gap over there. Means हम लोग कैसे किसी चीज को this theoretical concept को कैसे feed out करना है.
जैसे देखो गाइस, आप लोग जानते हो कि हाउ टू लर्न द थिंग्स ओवर देयर, बट हाउ टू टीच द थिंग्स, हाउ टू फीड द थिंग्स इनसाइड ऑफ यू, कैसे आप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट बन करके किसी चीजों को बोलते हो। 10 hours hands on the tool experience, यदि आप टूल के लिए यदि आपको इंटरेस्ट है, तो देन one dedicated person will be available for you. This is the one log analyzer will be available there, and some of time I will also available, RO will also available. That one is the help you how will go for the log analysis for the 10 hour time will provide you for the specific domain. एक्सपर्टीज बनाने के लिए, एक्सपर्ट वहाँ पे एक्सपर्टीज को देने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग दिस टूल फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ द पैरामीटर। जिस तरीके का फ्लो होगा उस तरीके की हम लोग यहाँ पे चीजों को डिलीवर करते हैं। सी दिस वन इज द सेपरेट placement cell is here. Our team is there, that one will prepare the resume, how to speak, how to develop your personality, how to track the interviewer, means the आपको सब चीज पता है, you know the all technology, you know the LT technology, but interview is not got clear. So how to trap the interviewer, how to no need to give the chance to the drag the interviewer, you should drag the interviewer. आपको कैसे वो टेक्निक बताई जाती है, तो दिस वन इज द इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट इज हियर एंड दैट वन इज गिविंग द चांस टू यू कि अभी उसके पहले जब भी एक टेक्नोलॉजी फिनिश होती है तो उसमें हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं कि हाँ इस टेक्नोलॉजी में क्रैपिंग क्या है, हर एक स्टूडेंट का ट्रैकर होता है कि वो क्या किया क्या नहीं किया। इफ यू आर गाइस यू आर नॉट serious here, then no need to join here. Okay, if you are the serious about the technology, if you are serious about the career, aap thoda serious ho, then really this one is the good for you and you can come and join and enjoy your journey, technical journey as well as the professional journey and all. Okay, so wow, how will give we are giving the tool information is here. So suppose that our device is a camp over the network, so we are giving the information here. First of all, device is the send RRC connection request is here. This one is RRC connection request setup complete. Setup is the complete here, and in between of the setup complete attach request is here, and after that device is the moving for the authentication parameter here, authentication request, and after that we will move for the authentication response. Then security will be the community picture security command, and security command is the completed. Then security for the NAS and security for the AS parameter will become in the picture. After that you can move for the UV capability inquiry information, and then we will move for the attach accept, and attach accept completed parameter activate default TPS there. So one by one we will give the practical exposure and as well as the theoretical exposure. So Aarav, are you available? Yes. Deepak will Okay. share So, the screen. Aarav, I will hand over in the next 5 minutes to you, and you can handle the thing. So till here, guys, we are covering the whole things here, and I'll already explain the technical parameter over here. For the managerial things, we can go for the RO. RO will explain the each and everything to you, and really, if you're going to join, then really you will enjoy the session and all, because batch is already started. One class is done, and then if you want to go for the further steps, then you can contact with the RO will suggest for you. Till here, any question regarding the technical things, please go ahead guys, and you can ask with me. I'll Raman, explain. please demonstrate about the tool Deepak is showing. Okay, so what happened here? See guys, here you can give me the SSR, I'll show you. Permission, you can grant me the permission, I'll show you the information. See here guys, this one is the QXDM tool. Same like that, whatever my screen is visible guys for you. Yes, visual. Yes, please. The same like that one, QXDM tool and QCAT tool, Lysol tool is the same like that. Okay, so here if you are talking about the QXDM tool, this one is the QXDM tool, this one is the QCAT tool. If you hey Aarav, do one things here, you can replay the one log. Yeah, just wait. Here from here, if you're able to see my screen, then you can go here, log file, and you can select the log, randomly select.
and replay the log. See guys, this one is the log file, is the replayed here, and we will try to analyze the log file. Hey Aarav, you can take over now. Okay. Okay. I have done from my side. If you guys have any technical query, then please come with me. I will try to explain you. This one is the Lysol tool. Okay, and after that you can go for the Wireshark also. So from day one we are going to provide the technical expertise for you. Okay, हम लोग डे वन से ही आप लोगों को लॉग एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और वहां से ट्राई करते हैं कि हाँ आप लोग लॉग एनालिसिस करो, आप लोगों को बेसिक पैरामीटर का डिस्कशन करो, एंड देन उसको थियोरेटिकल पोर्शन को ले जाते हैं. वन डे थियोरेटिकल क्लासेस एंड अनदर डे इज द next day is the practical classes is going on. Okay, we are provide the study material and all things for the in the sufficient matter, what is the running in the market and what is the top 10 question in the interview. We are doing the practice here. Hey, I don't know, you can take over. Yeah, thanks Roman for making session interactive in terms of technical. I hope all are enjoyed in last 1.5 hour. Guys, yes or no? Raise your hand. Yes sir. Yes, sir. Yes. आवाज में दम नहीं लग रहा ना? Yes, sir. Everyone, I need Yes, sir. everyone voice. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, So guys, our journey will be total 4 months. Okay, including interview preparation and all hands-on experience on tool, many more things, as Ram already discussed in a better way. Okay, so now you have any question, you have any doubt, you can ask me. सर ये LTE प्रोटोकॉल था ना? This is both LTE plus 5G, both will cover in 4 months. सर जो वोल्टी प्रोटोकॉल है वो अलग है क्या? सिप IMS जो है अलग है? SIP and IMS अलग है, but now in this course the UE behaves IMS registration and call flow also included. Yes. If you want complete SIP and IMS, we have a separate session. तो सर अगर हम सिप IMS करते हैं तो सर उसका ड्यूरेशन बता दीजिए, फी और हाँ फी और ड्यूरेशन. अभी हम will discuss about 4G and 5G. Okay, you can call me if you are interested for SIP and IMS. Okay. Okay. And So this course, yes. I want to ask, the 4-month duration, is it going to be Monday to Friday or weekend only? It's weekends only, and Saturday, Sunday in morning 8 a.m. to 10 a.m. Okay. Yeah, and the session will be start by next Saturday sharp 8 a.m. Sir, which time I call you, sir? After this session, you can call me, Ambus. Okay, sir. Yeah. And we are charging for 4G, 5G protocol testing 36,000. Okay. And also you can pay in 3 EMI option. We are accepting credit card as well. Now, any question you can ask me. So who is going to join, raise your hand so that we can understand. Only 4 candidates. What about rest? Hello, sir. Yes. Sir, actually, I have an interview on 29. So I was searching to how to get be prepared for the interview. So one of my friend given a link.
So can you please share some questions that can interviewer ask from me? This is demo session. Okay. Where Mm-hmm. will not share anymore. Mm-hmm. You can enroll, will definitely help. Also, Okay. also there, na, we are having a separate team. If you have some knowledge about the technology and all, the Mm-hmm. team is here. That one is going to help throughout the Actually, classes. I'm professionally RF engineer working here in the UAE, and Okay. I have applied for a protocol test engineer as well. So, but I have some not knowledge about the protocols. I'm studying there within last 10 days. So that's why Okay. I'm also joined So, this group. so this one is a good platform for you because we are starting the class from the basic level. Mm-hmm. Is the how technology is they introduced and what is the depth of the technology and how will Mm-hmm. grab the things, how to trap the interviewer and all. So Mm-hmm. this one is a good platform for you to learn the point and all. Some of the institute is having the fake promises, but we are not going to do the fake promises. Okay, Mm-hmm. Okay. that's why we are having the reliability of the student. We are not forcing to the student you will come and pay 40,000 rupees at a time, but we are providing the reliability and we are know how to the student is going to pay the money and all. So RO is the great thing is the having by the RO. We have the great facility over there that one is the provide the EMI option also. Okay. Now, Mm-hmm. Arab Tech Solution is a company. We have on running project. That's why we have lots of infra for you guys only. Okay. All all tool license based because my team is working India as well as out of India. Lot of So the yeah, person so is do you have also projects working in in the UAE. UK? Sorry. Do you have projects in UK? And do you place guys on placement We in have the UK? placement cell. Okay. We'll arrange your interview in different companies. My project is going on Vietnam with VNM Mobile, Movifone, Pinaphone, and in Thailand we are working for DTech Thailand, DTech operator. In India we are working for Jio, Airtel. We are working for MediaTek. We are working for Nokia projects in terms of testing. Some devices coming in market. My team is testing in India. So this is Okay. right place to learn the thing and grab Can this the be job in can this open testing market. be done remotely? Sorry. Can the testing be done remotely? Because I mean I'm in the UK, for example. So how do I My benefit from the practical experience? You know, when the placement is done. no, placement is open market, na. If suppose in India, lots of one of the company is working for UK. Okay, we have lots of contact because I already spent in this industry around 15 years. Okay, Okay. so whenever is opening in UK or US, you belong to that country. Will refer your CV of the HR. You are already living there. Yes. That is the opportunity. Now company is not sponsoring visa. You are already resident of that country. So on that time will